Alright, what is a terrain without trees and bush and other plants in there? So before we can start planting trees on this terrain, I would like to introduce you to another asset. And for that, we will go to the asset store. And on asset store, simply search for something called standard asset. A few years ago, standard asset was actually part of Unity installation. It used to come from Unity. So you search for standard asset and you should get to see a number of search results, but this standard asset free, which is coming from Unity Technologies, is the one we're looking for. So you click on that to get more details, and this is the icon, how it looks like, and there are several things in there. Standard asset में ट्रीज हैं, कुछ सैम्पल गाड़ियाँ हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कंट्रोलर्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ साउंड म्यूजिक है, कुछ एनिमेशंस हैं. It's one stop shop for a lot of stuff that you really need in your project. So what I'm going to do is I'm going to download and import. I have already downloaded, so I'll click import. While you could probably pick and choose, but the best idea is that you just import everything once you import the standard asset. And every now and then we will use different portions, और इसमें से मुख्तलिफ चीज़ें हम अपने स्टैंडर्ड एसिड में यूज़ करते रहेंगे. इसमें आप देखेंगे कि इसमें एनवायरनमेंट्स हैं, इसमें पार्टिकल सिस्टम्स हैं, इसमें मटेरियल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ ऑडियो मिक्सर्स हैं, 3D मॉडल्स हैं कुछ, जिसमें मॉडल में से गाड़ियाँ हैं, ह्यूमनॉइड कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ सीन्स भी हैं चेक करने के लिए कि इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है. सो रिगार्डलेस कि इसमें क्या क्या है, जस्ट क्लिक ऑन द इम्पोर्ट एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स ताकि ये आपके प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट हो जाए. और इम्पोर्ट होने के बाद एसेट्स के फोल्डर में एक स्टैंडर्ड एसेट्स का सब फोल्डर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा. So be patient. It's going to take a minute or two to actually import anything and everything into your project and convert it according to the requirements of your current scenario. अभी हम स्टैंडर्ड एसेट्स इसलिए इंपोर्ट करें क्योंकि इसमें ना सिर्फ हमें ज़मीन के टेरेन के टेक्सचर्स जैसे घास और ज़मीन और पत्थर वगैरह मिल सकते हैं, बल्कि कुछ बने बनाए ट्रीज़ इसमें अवेलेबल हैं, तो हम कुछ दरख्त इसमें से यूज़ करना चाह रहे हैं. बाद में हम इसी स्टैंडर्ड एसेट पैकेज में से और बहुत सारे प्री बिल्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे और बड़ी आसानी से हम कुछ गेम्स बना पाएंगे. राइट नाउ इसको इंपोर्ट करने का मेन मकसद ये है कि हम कुछ रियलिस्टिक लुकिंग ट्रीज़ यूज़ कर सकें अपने टेरेन के ऊपर. सो लुक्स लाइक के इंपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है.